Moving on to deducing the number of protons, neutrons, electrons, or the mass number of the nuclear number of an atom or an ion. तो ये आपको आने चाहिए. For example, I have four types of oxygen written over here. मेरे पास ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन एटम भी है, ऑक्सीजन आइसोटोप भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, ऑक्सीजन आयन भी है. So if we look at the number of protons, they are all the same in each of the oxygen. Number of neutrons कैसे आ रहे हैं? I am back to mass as the mass protons को जब आप separate करेंगे तो you would get the number of neutrons, mass minus protons. Number of electrons कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ पे तो you can see no charge, so they are the same. जितने protons हैं उतने ही electrons होंगे. Over here you can see no charge. जितने protons हैं same electrons. Over here you can also see no charge. यहाँ पे कोई charges नहीं दिए हैं. The protons would always be the equal to the electrons because these are the atoms. Over here you can see that we have oxygen ion और 2 minus का charge है. 2 minus means that it has gained 2 electron. तो आपके पास electrons 10 हो जाएंगे. Same is the case, we have an example of chlorine, nitrogen, lithium ion, sodium ion, aluminium ion and copper ion as well. अब कभी कभार वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि find the number of electrons in an aluminium ion. अब ऑब्वियसली आपको कैसे पता है कि एल्यूमिनियम आयन कैसे लिखते हैं? एल्यूमिनियम +1 होता है? नहीं. इज एल्यूमिनियम +2? नो. इज एल्यूमिनियम +3? यस. So this is how you have to identify the ions. अगर वो आपसे कहते हैं कि find number of electrons in a calcium ion, तो आपको पता होना चाहिए कि calcium ion का मतलब है Ca2 plus because it's group number 2. And then you can say that yes, इसके protons 20 होते हैं, but electrons are 18. So I will be giving you some practice questions for this chapter number 1 once we're done with it.